Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Student, in the previous class, we have completed first part of a civics chapter. Today, we are going to continue with our remaining part of a chapter. So, let's start. Civics Chapter 1 Introduction to our Constitution. Student, as you all know that last week we have not taken our online classes. So, some of you have remember what we have learned in the previous class and some of you have not. So, first let's take a recap of what we have learned in our previous class. So, what we have learned in our previous class, student? We have learned about the meaning of Constitution. What is Constitution? It is a book in which all the provision regarding the administration of a country are mentioned in a systematic way. It is called as Constitution, right? Then we have seen the provision in the Constitution. There are different things which have been mentioned in the provision of the Constitution, and each and every person have to follow that provision which are written in our Constitution. Then what we have seen? We have seen the necessity of the Constitution. Necessity means some advantages regarding our Constitution. Why? Because each and every person, each and every people who are a citizen of a country, they should follow the advantages which are written in our Constitution so that no misuse of our powers or authorities have been done by the person. Okay. So student, this we have learned in our previous classes. Today we are going to learn what are included in the administration of a country. Student, administration means management. Okay. So what is included in the management or administration of a country? Let's see. Government has to make law relating to several subject, right student? Government has making laws which are related to general public. What are these laws, students? These laws are defending the boundaries. डिफेंडिंग द बाउंड्रीज मीन्स बाउंड्रीज नहीं लगाना चाहिए, ओके, बाधा नहीं लाना चाहिए कोई काम में. प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इट मीन्स जो टेररिस्ट हमारे कंट्री में एंटर्ड होते हैं उससे द पीपल को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी हटाओ. क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो लोग जिनको काम नहीं है उनको क्या देना, रोज़ी देना. एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड. एनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज हैव टू बी स्टार्टेड. प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं वहाँ पे लोगों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. मेकिंग पॉलिसीज़ for the progress of women, children and tribal people. People who are living in forest area, tribal people, children and women who are deprived of education, जिसको education नहीं मिल पाता, वैसे लोगों को क्या करना, उनके लिए policies बनाना for the progress of the women's, children's and the tribal people. Student, government has making these laws. Why? So that he can bring desirable changes in our society with the help of these laws, right? In short, student, we can say
गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स, हम 21st सेंचुरी में रह रहे, राइट. सो अभी की जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, व्हाट डिसीजन दे आर टेकिंग, दे आर टेकिंग डिसीजंस relating to the issue right from space research to public क्लीनिनेस. स्पेस से लेके स्टूडेंट पब्लिक क्लीनिनेस तक, हमारे पर्सनल हाइजीन तक, जनरल पब्लिक के, ये सब डिसीजंस किसको लेना है? गवर्नमेंट को. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन. हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और द कॉन्स्टिट्यूशन, now let's see how the Indian Constitution was made. Background to the making of the Constitution. अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह फ्रेम हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है. ओके. द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने का प्रोसेस जो है कब स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1946. कब? 1946 में. स्टूडेंट, when this constitution was started making, the leaders of freedom movement, what they did, they insisted, they forced that independent India, our country become independent, right? So the independent India will be governed not by the law made by the British, but by the laws made by the Indian themselves. So student, the leaders, what they decided that the constitution has been followed, that should be governed by our laws. जो हमारा लॉ है उस हिसाब से क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न होगा, ना कि वो लॉ जिसने ब्रिटिश ने बनाया है. अंडरस्टूड. इसके लिए स्टूडेंट व्हाट हैपन, अ कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए व्हाट हैपन, एक कमिटी एस्टैब्लिश की गई. एंड स्टूडेंट, दैट कमिटी was known as Constituent Assembly. Understood student, what is Constituent Assembly? Now let's see this Constituent Assembly in detail. India became independent on August 15, 1947. You all know that, right? 15th August 1947 को हमारी कंट्री क्या हो गई थी? इंडिपेंडेंट हो गई थी, आज़ाद हो गई थी, राइट. इसके पहले क्या था स्टूडेंट? बिफोर दैट व्हाट, इंडिया के ऊपर क्या था? ब्रिटिश का रूल था. ब्रिटिश वॉज रूल्ड ओवर आर इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंट. ओके स्टूडेंट, दे हैड डिवाइडेड आर इंडिया इनटू प्रोविंसेस like Bombay, Bengal and Madras. Why they have divided our India into provinces student? So that the administration should work conveniently. जो management है वो क्या हो? Smoothly, conveniently क्या हो? Manage हो सके. The administration in these provinces was carried out by people's representative. ये जो administration है student हमारी country का, उसके जो प्रोविंसेस है, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये जो प्रोविंसेस है उसको कैरिड कौन करेगा? कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लोगों का एक नेता. फॉर एग्जांपल, इलेक्शंस में हम जिन लोगों को वोट्स देकर जिताते हैं, राइट, नगर सेवक हम उनको बोलते हैं, वो क्या करता है स्टूडेंट? एक पर्टिकुलर एरिया का जो भी प्रॉब्लम होगा वो हैंडल करता, राइट. तो उसको बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. अंडरस्टूड. सिमिलरली स्टूडेंट, द लोकल प्रिंसेस वे कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज. पहले क्या था स्टूडेंट? सम एरियाज हैव बीन कैरिंग आउट बाय लोकल प्रिंसेस. लोकल प्रिंसेस मीन्स राजा महाराजा लोग कुछ एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे. सो दैट एरिया स्टूडेंट वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स. क्या बोलते थे वैसे एरिया को? प्रिंसली स्टेट्स.
and the chief was known as princess. हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. सो वो लोग जो एरिया को प्रिंसेस हैंडल करते थे उनको क्या बोलते थे, प्रिंसेस. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट. प्रोविंसेस का रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसली स्टेट का, जैसे कि प्रिंसेस, ये सबका सब कुछ कहाँ पर इंक्लूडेड है स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. देयर आर टोटल ऑफ 299 members in our constituent assembly. How many members are there student? 299 members. Dr. Rajendra Prasad was the president of our constituent assembly. Understood student? Constituent assembly. Now let's see the contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Student, who was Dr. Baba Saheb Ambedkar? Yes, Dr. Baba Saheb Ambedkar was the chairman of the drafting committee. What is drafting committee student? A group of people who sit together to frame constitution. एक लोगों का ग्रुप जहाँ पर बैठ के डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी. स्टूडेंट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टडीड इन डेप्थ मीन्स डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व्हाट ही डिड, उन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको उन्होंने क्या किए थे स्टूडेंट, डिटेल में स्टडीड करे थे. आफ्टर स्टडीड व्हाट ही डिड, ही डे एंड नाइट ही गो थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन डीपली उन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन माइन्यूटली डे एंड नाइट गो थ्रू इट टू मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन. सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडीड करके दे मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन prepared by him was presented to the constituent assembly. Whatever constitution student he had made, he present that constitution in the constituent assembly. When he presented student, each and every article has been discussed in the assembly. Many amendments were suggested by different members. Amendment means changes or addition. Okay. Dr. Baba Saheb Ambedkar handled the task of presenting the draft, answering the various questions raised on it, making changes in the draft as per the suggestion of the Constituent Assembly, and making every provision of the Constitution flawless. Student, when Dr. Baba Saheb Ambedkar present the Constitution, so many questions has been raised. Okay, so he handled each and everything. Why? Because he wanted that our constitution should be flawless. Flawless means without any imperfection. He wanted that a constitution should be perfect. Due to this, student, Dr. Baba Saheb Ambedkar today is known as architect of the Indian Constitution. स्टूडेंट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इतने सारी मेहनत के बाद उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किए. ही लिसन एवरीथिंग अबाउट द पीपल, ओके, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए उनके सेक्रीफाइस, उनका कंट्रीब्यूशन, इन सब के वजह से टुडे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay student, the Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26th November 1949.
Now our constitution is ready, right? And it is legally adopted. Legally कब हमारा constitution adopt हो गया? 26 नवंबर 1949 को. Have you understood this student? आप लोग जो preamble बोलते हैं असेंबली में, याद है आप लोगों को? आप उसमें भी रीड करते हैं ना कि आर कॉन्स्टिट्यूंट on the day of 26 November 1949 we adopted it, है ना स्टूडेंट? सो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली क्या हो गया? अडॉप्ट हो गया. इसीलिए स्टूडेंट 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. See student, this date is very important. Okay, 26 November what happened? We celebrate Constitution Day. The country began to be governed according to the provision of the Constitution from 26 January 1950. Understood student? Legally it is accepted on 26 November. But हमारी जो कंट्री है वो प्रोविजन को कंडक्ट करना लीगली स्टार्ट होना कब से स्टार्ट हो गया? 26 जनवरी 1950 से. द इंडियन रिपब्लिक came into existence. Indian Republic means a representative which we elected. Okay, so this Indian Republic student, they came to an effect on this day. Which day? 26 January के दिन. Okay, therefore student 26 January is celebrated as Republic Day. So have you understood now student why we celebrate Republic Day? Because हमारी कंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है has been accepted, has been came into effect on 26 जनवरी. इसलिए हम 26 जनवरी क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे. स्टूडेंट see this picture. Dr. Baba Saheb Ambedkar, he was presenting the constitution to Dr. Rajendra Prasad. He was the president of Constituent Assembly. देखिए आप लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बाद वो असेंबली में किसको दे रहे हैं, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को. स्टूडेंट, not only Dr. Baba Saheb Ambedkar or Rajendra Prasad was the member of Constituent Assembly, but Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Azad, Sarojini Naidu, they were also a member, well-known members of our Constituent Assembly. So student, here we are completed our first chapter of civics. Now what next? Yes, now let's discuss some question and answers. See, answer in one or two sentences. First question, why do we follow norms and rules? See student, this we have learned in a previous class. हमको rules follow करना क्यों चाहिए? Yes, we have to follow norms and rules in order that whatever activity we are doing in a family, a school, a village or city, they carried out smoothly, वो smoothly हो सके. इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? We should follow rules. Second, how is the administration of a country carried out? हमारा जो administration है student, किस तरह वो चलता है? It is carried out through a system of rules, है ना student? कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रोविजन हो, everything have been carried out through a system of rules. Each and everyone have to follow the rules. Now see next. Explain the term constitution. What is constitution? A book in which
all the provision related to the administration of a country are mentioned in a systematic way but together, okay, is called constitution. Question number 4. What is governance? Yes, government student in modern times, I have explained you this right now, okay, कि modern times की government है, they have to take decision related to different issues, right from space research to public cleanliness. So ये जो modern times की government है, this government is known as governance. Understood this, student? Now let's see the answer the following question in brief, some brief question, okay. See student, on what subject does the government have to make laws? ये हम लोगों ने अभी देखे, ओके, कि गवर्नमेंट्स को कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाना पड़ता है. सो गवर्नमेंट हैव टू मेक लॉज like defending the boundaries, protection the people from external aggression, eradication of poverty, जो गरीबी है हमारी कंट्री में उसको हटाना चाहिए, राइट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू द पीपल, टू द वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, to the women student. Most of the children in our country, they are deprived of education. Deprived means उनके financial condition घर के ख़राब होने के बावजूद what happened, उन लोगों को proper education नहीं मिल पाता. So it is a duty of a government, it is written in our law that the government should provide education to the children's, to the weaker sections of our societies. गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं हमारी सोसाइटी को, उनको क्या देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, ओके. सो ऑल दिस लॉज हैव बीन रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन. अंडरस्टूड. सेकेंड, वाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे? क्यों स्टूडेंट हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते रिपब्लिक डे? बिकॉज our country, हमारी जो country है, it is begin to be governed according to the provision. yes, हमारे provision के हिसाब से हमारी country वो दिन पे क्या हो गई थी, इफेक्ट स्टार्ट हो गई थी लीगली वर्क करना. इसलिए we celebrate 26 जनवरी as Republic Day. Now last one, a constituent assembly was established. How our assembly was established, student? Yes, this process, student, to make the constitution has been started in 1946, right? What happened when it was started? I explain you. The leaders of a freedom movement, they insisted that the constitution should be run according to the constitution which has made by our Indian, made by our republic peoples, not by the laws made by the British. It is made by our Indian themselves. For that, student, a committee was established to prepare the constitution. So this is known as Constituent Assembly. So have you understood this question answers, student? So student, what you are going to do now, in the first part you have written half of the chapter. I have seen in your book some of you have been completed your book, well maintained your books, and some of you have written, they try to write. So student, whatever you have written in a first chapter of a civics, you just have to continue this, okay. जो भी आप लोगों ने फर्स्ट हाफ पार्ट में लिखे हैं, आपको उसी के आगे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर है उसको कंटिन्यू लिखना है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस lecture very well. Try to learn the question answers, try to watch the audios,
It will help you to learn the lesson, to understand the lesson very well. Thank you.